নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত এইকেইদিন বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ক্ষমতালৈ আহিলে মুছলমানক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দি SC বা ST কৰি তেওঁলোকক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আচলতে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ পিছত অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল। অনুৰূপ ব্যৱস্থা পশ্চিমবংগতো মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰিছিল। অনুৰূপ ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত ৰাজস্থানত আছিল। এতিয়া ৰাজস্থানত এই ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান অনুসৰি ধৰ্মৰ নামত কাকো সংৰক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ভোটৰ আশাত মুছলমানসকল পিছপৰা বুলি কৈ তেওঁলোকক SC বা ST ষ্টেটাছ দি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বিজেপিয়ে দাবী কৰে এইবাৰ এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'লে এইখন চৰকাৰে সংবিধান সলনি কৰিব। এতিয়া এনেধৰণৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্বই বাৰে বাৰে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'লে বিজেপিয়ে সংবিধান সলনি কৰিব। ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব বিজেপিয়ে। এইখিনি সময়তেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপি শাসিত ৰাজস্থান। আচলতে মুছলমানক কেন্দ্ৰ কৰি এই নিৰ্বাচনত বিশেষ আলোচনা হৈছে। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'লে মুছলমানক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াৰ ফলত দেশৰ প্ৰকৃত অনুসূচিত জাতিয়ে নিজৰ প্ৰাপ্য ন্যায় হেৰুৱাব। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যাৰ বিৰোধিতা বাৰে বাৰে কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত ৰাজস্থানত বলবৎ হৈছিল নতুন নিয়ম। কেইবাটাও মুছলমান সম্প্ৰদায়ক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে এই নিয়ম সলনি কৰিব। বিজেপিৰ মতে আম্বেদকাৰৰ সংবিধানত ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা এবাৰো কোৱা হোৱা নাই। পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংবিধানত কোৱা হৈছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহে বিভিন্ন ৰাজ্যত মুছলমানক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুছলমানক SCৰ মৰ্যাদা দিছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াক অগ্ৰাহ্য কৰিলে। এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৰাজস্থানৰ বিজেপি চৰকাৰে। देश का संविधान ये कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में धर्म के आधार पर हम लोग भारत को विभाजित नहीं कर सकते और आरक्षण की व्यवस्था भी हम लोग नहीं कर सकते। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है आरक्षण एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से असमानता का प्रतीक है और धर्म के आधार पर इसमें कोई जगह नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जहां पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर आरक्षण दिया। उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया। इससे पहले भी राजस्थान के अंदर 1998 से 2013 तक मुस्लिम समाज की 14 कम्युनिटीज़ को उन्होंने OBC में आरक्षण दिया। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण मिलता है OBC कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, सर्वे के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखते हुए, और उसके लिए बहुत लंबी एक प्रक्रिया रहती है। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस सरकार ने हमेशा जातियों में और धर्म के आधार पर भेदभाव किया है। तो 1998 से 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय जिन 14 जातियों को, मुस्लिम जातियों को धर्म के आधार पर OBC में आरक्षण दिया है, हमारे पास शिकायतें मिली है। हमने ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है, निश्चित ही अगर गैर कानूनी तरीके से हुआ होगा, संविधान के विपरीत हुआ होगा या जन जो भावना उसके खिलाफ में हुआ होगा तो निश्चित ही 4 जून के बाद में एक कमेटी बनाकर इसका रिव्यू किया जाएगा और हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है। এই নিৰ্বাচনত মুছলমানৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটোক লৈ ব্যাপক হাৰত আলোচনা চলিছে। মুছলমানৰ সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে মুছলমানক সংৰক্ষণ দিয়াৰ কথা কৈছে। সংবিধান সলনি নকৰে বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। ঝাৰখণ্ডৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘোষণা। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा
ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने ये इंडी वालों को एक मांग की है उनसे, करीब 1 महीना, सवा महीना हो गया। मैं इनको कहता हूं, आप लिखित में देश को विश्वास दो कि आप दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण छीनेंगे नहीं, लूट नहीं लेंगे। लिख करके नहीं देते हैं। मैं उनको कहता हूं, दूसरा लिख करके दो, आप संविधान बदल करके हमारे एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण मुसलमानों देने का संविधान में बदलाव नहीं करोगे। मैंने तीसरा उनको कहा कि रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाकर ओबीसी का आरक्षण जो आपने कर्नाटका में लूट लिया है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं करोगे। ये लिख करके दो। बोलने को तैयार नहीं है। भाई ईमानदारी है तो जरा हिम्मत से बताओ ना, क्यों चुप बैठे हो? इसका मतलब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे ओबीसी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, आप जाग जाइए। ये लूटने की ताक में बैठे हैं। आपको जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, इसको लूटने के लिए ये लोग बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एनबी न्यूज।